Hello everyone, welcome back to IELTS Adda. Here's your esteemed teacher Nishtha Singh. I hope all of you are doing really great. So कौन कौन आ गया है? Monica and Roshni are here. Good evening बेटा. So how are you? How was your day? कैसा रहा आप लोगों का दिन? क्या क्या किया आपने अभी तक? I hope अच्छा रहा हो अभी तक जो भी आपने किया, right? Okay. तो चलो आज सबको याद है आज हम क्या करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट. आज आप लोगों को आज दिख रहा होगा लिसनिंग ऑडियो प्रैक्टिस, राइट. सो बेसिकली ये क्या है, हमारा एक टेस्ट है आज का, ठीक है ना, प्रैक्टिस टेस्ट है आज. तो आज हम क्या करेंगे, आज बेसिकली हमारी क्लास सिर्फ टेस्ट के ऊपर है. आज हम सिर्फ टेस्ट देंगे. आंसर्स हम कब डिस्कस करेंगे, आंसर्स हम लोग कब डिस्कस करेंगे, कल हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे. बट मुझे आप लोगों के आंसर्स कहाँ चाहिए, देखो जब आप लोग टेस्ट दे दोगे, ठीक है, उसके बाद में जब ये क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके दोगे आंसर्स, ठीक है. लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, मतलब अभी जो करोगे दैट इज ओके, बट क्या करना है, मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में बाद में चाहिए, ठीक है ना. सो दैट मैं वहाँ से देख के और फिर उसके बाद में एनालाइज कर सको, फिर हम आंसर्स चेक करेंगे. हाय स्मिता, गुड इवनिंग. हाय सुखी, गुड इवनिंग. बेटा आप दोनों 3 PM वाली क्लासेस में नहीं थे. स्मिता आप बेटा 2 दिनों से नहीं, मतलब लाइक एक दिन आप नहीं आए हो. मे आई नो द रीजन क्यों? अरे वाह, दैट्स ग्रेट मोनिका, दैट्स रियली नाइस. सी दैट इज द थिंग, हम रोल रिवर्सल कर सकते हैं, हम रोल प्ले कर सकते हैं. जैसे कैसे कि लेट्स से यू आर एन इंटरव्यूअर एंड समबडी इज योर लाइक कोई भी एम्प्लॉय है, कुछ भी एक कैंडिडेट है एंड ही और शी इज वांट्स टू टेक योर इंटरव्यू. तो इस तरीके से क्या होगा, फर्स्ट योर हेजिटेशन विल गो. आप जो बोल रहे हो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. यू विल यूज द न्यू वर्ड्स दैट यू आर लर्निंग, और क्या आएगा, हमारी हेजिटेशन यहाँ से क्या होगी, दूर होगी, ठीक है ना. तो चलो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ओके ओके ओके, नो वरीज स्मिता. सो आई गेस टुडे नाउ यू आर अवेलेबल. तो चलो नाउ यू हैव टाइम. देखो ये सेशन बेटा अप्रॉक्सीमेटली 50-40 मिनट्स का जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑडियो पार्ट ही है दैट इज ऑल्सो ऑफ लाइक 35 मिनट्स, लाइक 30-35 मिनट्स का रहेगा. ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. इफ यू हैव वॉच द वीडियो लेटर स्मिता प्लीज आंसर करो. मैंने 3 ही, देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस इसलिए नहीं करती सो दैट ऐसा ना लगे कि यार बहुत हेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हम भाग रहे हैं. नहीं, आराम आराम से कर रहे हैं. तो वो जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए उनके जो वर्ड्स हमने डिस्कस करे, हर्ड वर्ड के सिनोनिम मुझे बताओ, और सारी चीज़ें आप मुझे आंसर करना, ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग. जो बच्चे और हैं उन लोगों का बस मैं वेट कर रही हूँ सो दैट गगन आ जाए, ईश आ जाए, और बाकी सब लोग आ जाए एक बार, और उसके बाद में विल स्टार्ट दी ऑडियो. हाय कार्तिक, गुड इवनिंग ईश. तो चलो एवरीबडी इज ज्वाइनिंग, लेट्स वेट फॉर गगन एज वेल. फिर उसके बाद में 5 पे हम लोग ऑडियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो चलो आज का कोट देख लेते हैं, बहुत दिनों से हमने कोट नहीं देखा. सो कोट ऑफ द डे इज टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ. नाउ दैट इज व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग. देखो मेरा मैं ही नहीं, सिर्फ नॉट ओनली मी बट ऑल द टीचर्स कैन ओनली ओपन द डोर. हम लोग सिर्फ आपको उस जगह तक बता सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ दैट इज द वे, एंड वहाँ तक लेके जाके छोड़ के आ सकते हैं, बट आपको अंदर तो खुद ही जाना है ना. सो yes ish you can ask, please go ahead. So the point is whatever you want to do in your life ना, you need guidance. तो उसके लिए आपके पास आपके mentors होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए. बट जो हमें एक फाइनल स्टेप लेना होता है, दैट द थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ आवर ओन, ठीक है ना. हमें भी जब हम अपने टाइम पे थे व्हेन वी वर लर्निंग, सो ऑब्वियसली टीचर्स वर लाइक कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा करो, बट देन हमने स्टेप्स लिए, वी वर इनटू द टीचिंग एंड एवरीथिंग, उसके बाद में वी आर हियर. सो दीज आर द थिंग्स. हाँ बिल्कुल गो अहेड इश, ठीक है. उसके बाद में हम करेंगे अपना, ठीक है ना. सो माई पॉइंट इज प्लीज़ गो अहेड. जो भी आप लोगों को करना है उसके लिए जो भी चीज़ें नीडेड है, देखो यू कैन आस्क, आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन आस्क मी और एनी बडी इन योर लाइफ जो आपको लगता है कि हाँ दैट इज़ द राइट पर्सन, उनसे पूछो, ठीक है. वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे. एंड देन फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमें फाइनल स्टेप लेना है वो हमें खुद ही लेना है ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो चलो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5:05. ओके,
सो विल स्टार्ट दी ऑडियो नाउ बिकॉज लेट नहीं होना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चीज़ें करनी है। मैं चाहती हूँ आज का टेस्ट ना 40 के 40 क्वेश्चंस करके जाओ अटेम्प्ट। मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसका मतलब ऑडियो को आज आधा रोकूँ बीच में एंड देन विल गो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे बेटा, आई विल प्ले दी ऑडियो, सुनना आराम से एंड देन समझना, ठीक है ना। आई एम जस्ट मूविंग अहेड। चलो एश, आपका जो क्वेश्चन है ना बेटा, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन एंड कमेंट में डाल के छोड़ दो, फिर उसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। इतने ऑडियो सुन लो आप। बेटा ऑडियो आ रही है आई गेस, प्लीज लेट मी नो जब ऑडियो आप लोगों को सुनाई दे, मुझे बताना, ठीक है। One. You will hear a conversation between a client and a flight center agent about making changes to an airline booking. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Good morning, Mrs. Gray. This is Bert Stock speaking from Finnegan's Flight Center. I can now confirm your flight to Singapore. Oh, good. No problems, I hope. No, everything is in order. So we got the dates we wanted? Yes, leaving from Hong Kong on the 25th of July and arriving in Singapore later the same day. How long does the flight last? Oh, about 3 hours 40 minutes. So we'd get there at... 9:45. in the evening? No, 9:45 a.m. But that means we'd be leaving at... Your flight leaves Hong Kong at 6:05 a.m. So we'd have to check in an hour before that? Mrs. Gray, check-in closes 60 minutes before your scheduled departure. If you arrive after check-in has closed, you will not be able to board the flight, and you may forfeit your entire fare. I would strongly recommend that you arrive at the check-in counter at least 120 minutes before your departure time. So you're saying we should be at the airport no later than 4:05 a.m.? That's correct. But we'd have to get up in the middle of the night to arrive by that time. Can't we get a later flight? Not on July 25th. Now, there is a later flight on certain weekdays, but not at the weekend. Well, we must go with what we've got then, because we're not at all flexible on the dates because of work commitments. Can I confirm that you want to return on August 7th? Yes, that's the idea. Flight VQ239 will depart from Singapore at 9:20 a.m. on August 7th. Oh, that's a much more civilized time. Tell me, the time zone is the same, isn't it? We don't gain or lose an hour along the way. There's no change in the time zone, so you can expect to be back at around 1 p.m. Does that suit you? Oh, absolutely. I'll have time to unpack before dinner. We're expecting to meet friends at the new seafood restaurant at 8 o'clock. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. ओके सो बेटा सबसे पहली बात, वन थिंग, आंसर्स चैट बॉक्स में नहीं डालने हैं फर्स्ट, ठीक है। आंसर्स नोटबुक में पहले अपने लिखो,
उसके बाद में, क्योंकि सब लोग टेस्ट दे रहे हैं राइट, तो पहले अपना नोट डाउन कर लो और उसके बाद में मुझे आंसर्स कब कर दोगे आप लोग, सब लोग आंसर्स मुझे दोगे बाद में इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो एंड्स, या फिर बिफोर इट, क्योंकि सब लोग अभी कर रहे हैं तो इट विल डिस्ट्रैक्ट एवरीबडी एल्स, ठीक है। पहली चीज। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो मैं अब आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। Mrs. Gray, I'll send you all these details by an email or letter of confirmation. Which do you prefer? Well, email is faster, but we've been having difficulties with our internet connection. So, if you could post it out, I'd appreciate that. Now, just one or two other things to check before final confirmation. You're booked on a Lifelight ticket. What does that mean exactly? Well, you'll only have carry-on baggage. Is that right? Oh, yes, that was the original idea. It's so much quicker not having to wait around at the luggage carousel, but Yes? can you remind me of the allowance again? With a Lifelight ticket, you're allowed 10 kilos of hand baggage. I'm not sure that's such a good idea now. Oh? Well, apparently we're going to have to attend quite a few formal functions while we're away. So I think I'm going to need a real suitcase to fit the extra clothes and shoes in. Well, that's not a problem. I can upgrade you to the next level and change your ticket to Easy Flight. There will be an extra charge, of course. How much? $30 per checked-in item of luggage, weighing no more than 22 kilos per item. Well, we'll probably manage with just a single suitcase between the two of us. Is it possible to do it like that? Yes, of course. You can take the Easy Flight option, and your husband can stay with the Light Flight ticket. Great. I'll give you your reservation number now, so if you need to make any further changes or inquiries, you can just quote this reference, okay? Yes, I have a pen and paper. What is it? L4G BWF. L4GBUF? WF. Thanks, I've got it now. At this point, I can actually book your seat numbers. Do you have any preference? Window or aisle? Oh, not by the window, Bert. You see, I'm quite a nervous flyer, and I don't like looking out. What's more, my husband likes a bit of room to stretch his legs. Aisle would be good. Great. That's sorted then. As I said, I'll send you the details, and if you need to talk to the agency again, just quote that reference number I gave you. Thanks so much. Bye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Okay, so part 1 is done. That contains 10 questions. अब तुम्हारे पास हाफ मिनट, that means 30 seconds हैं. Check your answers. 10 के 10 एक प्रॉपर फॉर्मेट में, लाइक फ्रॉम 1 to 10 लिख लो, सो दैट मुझे बाद में बता सको कि आंसर्स क्या है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. नाउ पार्ट 2 विल प्ले. आई विल शो इट टू यू. ओके. Now turns to part 2. Part 2. You will hear a crime prevention and fire safety officer talking to a group of new residents. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Good evening. Last week, Mr. Jenkins spoke to you about home security. My name is Malcolm Fletcher, and tonight I'm going to talk about personal safety when driving and fire safety in the home. Of course, we shouldn't go around perpetually frightened of all the bad things that might happen to us. But there are some sensible precautions that we should all take to avoid getting hurt. You probably know already.
that a great number of serious assaults occur in the vicinity of motor vehicles. You should always be alert when walking to your car and check the rear seat of your car before getting in. This is especially important in isolated parking areas or the far corners of major shopping complexes. Now, once inside your car, get into the habit of locking the doors. Always keep the windows up and the doors locked, especially if you're traveling alone. If at all possible, steer clear of isolated roads after dark. Even with all the high-tech communication devices we have today, many serious crimes are committed on lonely back roads. Make sure your vehicle is mechanically sound and ensure you have adequate fuel in the tank at all times. If your vehicle does break down in a lonely spot, lift the bonnet and then lock yourself inside the car and call for help on your mobile phone. Never, under any circumstances, leave your vehicle and go with a stranger to seek help. It is better to wait for the police or some other emergency vehicle to stop and offer assistance. Of course, you should never pick up a hitchhiker. Some of the most serious crimes committed in this country have been a direct result of this foolish practice. If you think you're being followed by someone in another vehicle, ideally you should drive to the nearest police station. But if there isn't one within easy reach, drive to the nearest open service station or shop, or the nearest occupied house. Now, we are lucky enough to have a police station in this area. Do any of you know where it is? Look at this map on the screen, and I'll show you how to get to it from the community centre where you are now. Then, when you get home, you can work out how to get there from other directions. From the community centre, go along Bayview Street toward Maiden Avenue. At the roundabout, take the second exit onto Lee Street. Go past the medical clinic, and at the next roundabout, take the first exit onto Moore Street. You should continue on Moore Street until you have passed the little block of shops on the left and the church on the right. Stay on Moore Street until you go over the bridge, and then turn right into Canal Street. You'll find the police station on the corner of Canal Street and Cockleshell Court. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. क्वेश्चन 16 to 20 में लिस्ट ऑफ गैसेस है, टॉक्सिक गैसेस. सो पहले ये नोट डाउन कर लो एंड देन इसका हाफ पार्ट है ये रहा लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स. ओके, Now let's move on to fire safety. Before I talk to you about safety precautions and procedures, I'd like to mention some of the effects of smoke and heat on humans. There are 4 ingredients of fire, namely oxygen, fuel, heat, and chain reactions. Almost all materials burn, and most household goods burn very easily. The air we breathe contains about 21% oxygen. As fire burns, it consumes oxygen, thereby reducing the oxygen content of the air. When that is reduced to 15%, oxygen deficiencies in body tissue cause an impairment of muscle control and dexterity. At between 10 and 14%, judgment and reasoning are affected. Oxygen reduction to between 6 and 10% results in unconsciousness, and breathing stops. Sounds scary, doesn't it? But that's not all you have to worry about. Many materials in the home give off toxic gases as they burn. The main toxic gases are carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and nitrogen oxide. Carbon monoxide is an invisible and odorless gas produced in all fires. It takes up the place of oxygen in the blood, thereby reducing the supply of oxygen to the brain. The effect of carbon dioxide is to increase the heart rate and stimulate the rate of breathing, causing an increase in the intake of other toxic gases, which contributes to, amongst other symptoms, serious oxygen deprivation. Hydrogen sulfide, on the other hand, affects the nervous system, causing dizziness and pain in the respiratory system. It does occur naturally in volcanic gases and hot springs, and it also results from the bacterial breakdown of organic matter. You're probably familiar with it.
You know, it has that characteristic odor of rotten eggs. But make no mistake, in large concentrations, it's deadly. Lastly, nitrogen oxide is another extremely poisonous gas at high levels of concentration, which deadens feeling in the throat and lungs, causes swelling in the throat, and a buildup of fluids in the lungs. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. Okay, so 2 parts are done. 20 questions क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं. अब क्या है, नाउ वी विल मूव टू पार्ट 3. ठीक है, तो पार्ट 3 के लिए अगेन पहले 30 सेकंड्स जो मिले हैं उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 चेक कर लो, कहाँ पे क्या भरा है, क्या नहीं भरा है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, एंड देन मेक इट अ नोट. ठीक है. यस गगन, यू आर लेट. जो बेटा पार्ट 1 रह गया है प्लीज़ गो थ्रू इट. जब वीडियो एंड हो जाएगी गो थ्रू करना, एंड आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. ठीक है, सबके, सो दैट आई कैन चेक. चलो, यू हैव 30 सेकेंड्स, अपना चेक करो एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. Now it turns to part 3. Part 3. You will hear a conversation between a tutor and 2 students in the Political Studies Department of a New Zealand tertiary institution. First, you have some time to look at questions 21 to 25. ओके, मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं. गगन, गगन आप थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 आर नॉट रिलेटेड, पहली चीज़. एंड ऐसे सेइंग बीच बीच में ऑडियो कट रही है. ज़्यादा हर किसी के लिए ऐसा हो रहा है, ऑडियो बीच में अटक रही है. प्लीज़ डू लेट मी नो. अगर नहीं अटक रही है तो भी मुझे बताओ. ठीक है, एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लो बेटा, क्योंकि मेरे एंड पे एक्सीलेंट दिखा रहा है. देयर इज़ अ ग्रीन सिग्नल कि एक्सीलेंट कनेक्शन. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एंड पे ऑडियो नहीं अटकनी चाहिए, बट स्टिल आई विल ट्राई. मैं थोड़ा सा माइक को थोड़ा दूर रख के ट्राई करूँगी कि हो सकता है एको की वजह से ना हो रहा हो. एंड यू हैव टू रीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 25. 21 से 22 ये वाले हैं. ठीक है, these questions are 21 and 22, and then 23, 24, 25 are questions number here. ठीक है ना, तो पहले मैं वो वाली स्लाइड दिखा दूंगी एंड देन हाँ यू कैन गो थ्रू आफ्टर द सेशन एज वेल. देखो पार्ट यही है, ये सिर्फ एक ऐसा सिनारियो बना रखा है. देखो जो मैं बीच में बोल रही हूँ ना, दैट इज आई एम टेकिंग योर टाइम, बट वाई आई एम टेकिंग बिकॉज यू गाइज आर मैसेजिंग कि इश्यूज क्या क्या हैं, तो उन्हें सॉर्ट करने के लिए. बट एग्जाम में बेटा ये टाइम भी नहीं मिलता. अगर कोई इशू आता भी है ना तो उसके लिए पहले वो इनिशियली पूछते हैं आपसे. ठीक है ना, तो इनिशियली बताना होता है. तो चलो कोई बात नहीं, पार्ट ये वाला 21 से 25 तक अभी करो, सुनो ऑडियो, आंसर करो. एंड एवरीबडी आज करने के बाद में, ये सेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में वीडियो को गो थ्रू दोबारा करना, सुनना, समझना, फिर मुझे आंसर्स देना. ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं मांग रही तुमसे कि मुझे अभी आंसर दो, एकदम सही दो, नहीं. टेक योर टाइम, लिसन टू द ऑडियो एंड गिव योर आंसर्स. ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ठीक है विल डिस्कस एज वेल. चलो Good morning. Now, you've come to discuss how our parliament works. Is that right? Yes, it's a bit different from some of the other democracies we've studied, and we're a bit confused. Well, what do you know? We know that the system of government in New Zealand is a constitutional monarchy, but we're not sure how the power is shared or who has ultimate authority. The government is formed from a democratically elected House of Representatives. Is that the same as Parliament? Yes. The House of Representatives is what is commonly called Parliament. And the government advises the sovereign, who is our head of state. The sovereign is the Queen of England, right? She lives in England and she is the Queen of England. But when we refer to her as our sovereign,
We say she is Queen Elizabeth II of New Zealand. But how can she be our head of state if she doesn't live here? I know that she has a representative here. Oh yes, the Governor-General. That's right. Now, by convention, the sovereign is the source of all executive legal authority in New Zealand. So she's the boss. Well, you could say that. However, she or her representative almost always acts on the advice of the government. In all but the most exceptional circumstances, that is. So where does the real power lie? Good question. Our system is based on the principle that power is distributed across 3 branches of government: the Parliament, the Executive, and the Judiciary. But Parliament makes the law, doesn't it? That's right. So what's the point of the other 2? Well, you need a body to administer the law. That's the Executive, made up of ministers of the Crown. And the Judiciary interprets the law through the courts. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Okay, so question number 26 to 30 are a part of MCQs type. ठीक है, तो मैंने हर पेज पे के क्वेश्चन डाला हुआ है. मैं मूव करते जाऊंगी, जैसे जैसे ऑडियो मूव होगा उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस को आगे क्या करूंगी, मूव करूंगी. बट एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, रीड कर लो एक बार. मैं पांचों के पांचों क्वेश्चंस अभी एक बार दिखा दूंगी. रीड करो, समझो, एंड देन उसके बाद दोबारा से हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे. ऑडियो प्ले होगा, देन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. रीड इट आउट, समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. अगर ऑडियो में ये चीज डिस्कस होगी तो आंसर क्या होगा. ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. इसे भी अच्छे से रीड कर लो. इफ यू वांट, देखो नोट डाउन करने का टाइम नहीं होता है, अभी कर सकते हैं, दैट्स ओके, बिकॉज आई एम गिविंग यू टाइम. बट इन द एग्जाम यू डोंट बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम. बट आपके पास में सारे क्वेश्चन एक पेज पे रहेंगे, सो दैट इज ईजियर फॉर यू. ठीक है, बट अभी नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग द स्लाइड्स. नेक्स्ट पे चल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 हो गया. 28, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 28. गो थ्रू कर लो. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 अच्छे से गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, समझ लो, बिकॉज वंस द ऑडियो विल बी प्लेड, फिर उसके बाद में हम वापस से आएंगे. ठीक है ना. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, चलो वापस चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. उसके बाद में स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. आई स्टैंड हियर, आई चेंज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द ऑडियोज. Watching American legal programs on TV, I always hear people talking about the Constitution and how something is unconstitutional. What exactly is a constitution? It's a document outlining the basic laws or principles by which a country is governed. Do we have one? No. This would actually make a good topic for next semester's debate. There's quite a bit of controversy over that particular issue. New Zealand has no single written constitution or any form of law that is higher than the laws passed in Parliament. Okay, I think I've got that. The rules about how our system of government works are all contained in the laws that have been passed by Parliament? Those laws are called Acts of Parliament, but there are also other documents issued under the authority of the Queen and some relevant UK Acts of Parliament. Really? But it's all written down, right? Not exactly. There are several unwritten constitutional conventions as well. I can see why this would make a good topic for debate. Altogether, though, our system is quite simple because our parliament is unicameral. What does that mean?
It means there is just one chamber, the House of Representatives, and there is no upper house. I see. By upper house, you mean a second house, like a Senate? In the American model, yes, but the British have a House of Lords as their upper house, don't they? Yes, but the Lords don't have to be elected. But we have elections every 3 years to elect our people's representatives. Yes, and the electoral system is called proportional representation. A lot of democracies have quite different voting systems. Why is ours called MMP? That stands for Mixed Member Proportional Representation. So that's why each elector has 2 votes. Exactly. One for a local member of parliament for the particular electoral district you live in, and one for a preferred political party. So that's where the proportional part of it comes in. Political parties are represented in parliament in proportion to the share of votes each party has won in the party vote in the general election. Any more questions? No, not at this stage. Thank you for your time today. Okay. See you in class tomorrow. Bye. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. ओके सो 30 seconds हैं, अपने आंसर्स चेक कर लो. गगन इज सेइंग चेंजिंग स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू ऑडियो ऑल्सो गिव्स इन. देखो ऑब्वियसली इट विल, बट दैट डिपेंड्स. रीफ्रेजिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑडियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. दैट इज़ वाई. एंड वन मोर थिंग, ऑडियो के जैसे जैसे ऑडियो चलती जाएगी बेटा, क्वेश्चन का जो हायरार्की होगी एग्जैक्टली सेम रहती है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पहले दे दिया और ऑडियो में बाद में डिस्क्राइब किया गया. नहीं, ऐसा नहीं है. जो बात पहले हो रही है वही क्वेश्चन पहले दिया जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि किस तरीके से दिया गया है. गॉट इट. सो अपने क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 से लेके 30 तक चेक कर लो एक बार. और वैसे तो 21 से लेके 30 तक पूरे चेक करो, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि बिकॉज पार्ट 3 हैज़ एंडेड. तो 10 क्वेश्चंस चेक करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके. Now turns to part 4. Part 4. You will hear a talk on the topic of decision making and problem solving. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Good morning. Today, as part of your business management course, we're starting a unit on problem-solving skills and decision-making. Let's start with a powerful decision-making technique developed by Edward de Bono in his book, 6 Thinking Hats, which you'll find on your required reading list. The method works by compelling you to move outside your habitual ways of thinking. Often, success in business results from rational, positive thinking. But these approaches, used in combination with quite different ones, will improve the overall quality of your decision-making. Now, each thinking hat has a different color and represents a different style of thinking. Let's start with the white hat. When you're wearing the white hat, you look at the information you have. You look at historical trends and try to analyze them. And you take account of gaps in your knowledge and try to fill them. On the other hand, if you're wearing the red hat, you listen to your gut reaction and instincts. You also try to imagine the intuitive response that other people might have. How would other people, who are unaware of your reasoning and all the facts at your disposal, react? That brings us to the black hat next. Black hat thinking, as its name suggests, is
cautious and defensive. And you examine why something might not work. It all sounds very negative, but it is essential to know what the weak points in a plan of action might be. It permits you to alter your approach, eliminate problems, or at least be ready with contingency plans if the worst happens. After all, it is better to spot the fatal flaw and know the risks before you undertake a new enterprise. The opposite viewpoint, of course, comes with the yellow hat. It helps you to continue when the outlook is gloomy or the problems seem insurmountable. Think positively, and you'll see all the advantages and values of the decision and all the opportunities it brings. Let's look at what the green hat has to offer now. It stands for freewheeling, imaginative, inspired, innovative thinking, where there is little or no criticism of ideas. Original solutions to a problem are more likely to arise when you're wearing the green hat. Finally, the blue hat. This is the hat that the person chairing the meeting wears. The blue hat is in charge and organizes the meeting. He or she can point activities in the direction of other colored hats when required. For example, if ideas have dried up, the blue hat will suggest more green hat thinking. If there is too much exuberance and enthusiasm for an idea, the blue hat will ask for black hat thinking to ensure that any possible defects have been addressed. Needless to say, you can use 6 thinking hats by yourself, but it really comes into its own when participants with different thinking styles come together to make a sound decision. Now, another useful way to generate radical ideas or creative solutions to a problem is brainstorming. You're all familiar with the term brainstorming, and I'm sure you've all done it from time to time. But even in well-managed groups, sometimes big egos intimidate less confident participants, who in turn may feel pressured to conform, or are inhibited because of their respect for authority. What I would suggest in this case is a system called the stepladder technique. If you follow the flowchart on the board, you'll see there are just 5 basic steps. Firstly, members contribute on an individual level. The task is presented to them. They're given time to think and form their own opinions about how to solve the problem. You do this before you get them together as a group. Secondly, form a core group of just 2 people and allow them time to discuss the topic of concern. In the third step, a third member is added to the core group. But, and this is most important, that third person presents his or her thoughts before having a chance to hear the proposals that have already been put forward. When all 3 have explained their ideas, then they can consider their options collectively. In step 4, the same process is repeated. A word of advice here. Keep the group small to maximize effectiveness. You can limit the numbers to 4, or add more, but I wouldn't go above 7. Not if you want a good quality decision. The last step in the process is to get a final decision, but only after all members have been included and had the opportunity to communicate their ideas. The main benefit of this step-by-step method is to give even the most diffident and quietest people the chance to share their ideas before they can be influenced by others. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. Okay, so that was it. 40 questions, 4 parts. ऑडियो चली, क्वेश्चंस देखे, हमने आंसर भी किए, है ना. हर पार्ट के बाद में वी गॉट 30 सेकेंड्स टू चेक आवर आंसर्स एज वेल. तो अब क्या करना है ना, व्हाट इज़ योर वर्क टू डू इज़, मुझे 40 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, ठीक है. मैंने बार बार बोला था कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना. सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू नाउ,
पेपर पे आंसर्स लिखे होंगे, पेपर पे चाहे नोट में चाहे कहीं भी लिखे हों, दैट इज़ योर डूइंग, ठीक है ना, आप लोगों का है, आप लोगों ने कहाँ आंसर्स लिखे कहाँ नहीं लिखे बेटा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आप लोग क्वेश्चंस को जब आप आंसर अपने कमेंट में मुझे डालोगे तो क्या करोगे, नंबरिंग डालोगे 1 2 3 4 से लेके 40 तक, ठीक है। 1 के आगे आंसर, देन 2 के आगे आंसर, ऐसे 3 के आगे आंसर एंड 4 के आगे आंसर। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, देखो हर क्वेश्चन में और हर पार्ट से पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये जो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये ना एक बार फिर से एक बार रीड कर लेना। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने स्टार्टिंग में आंसर्स दिए एंड दोज आंसर वर नॉट अप्रोप्रिएट रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। इसीलिए जो स्टार्टिंग के आपको 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं, वाई, सो दैट यू कैन रीड दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। क्यों कहे जाते हैं, मैंने बात पहले भी बताया था, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो नाउ इन ईच आंसर ना आपको 2 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं देना है, ठीक है। सबमिट इन द फॉर्म, यस यू कैन सबमिट, सी दैट्स कमेंट पे मैं इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आप लोग बार बार ऑडियो मतलब वीडियो पे एक बार गो थ्रू करोगे, सो दैट वुड बी मोर फीजिबल फॉर यू, ठीक है। सो डू इट वन, फॉर्म में भी सबमिट कर देना, बट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स चाहिए, सो दैट ना एंगेजमेंट दिखेगी बेटा मुझे आप लोगों की थोड़ी सी, ठीक है। फॉर्म इज देयर, फॉर्म में भी मुझे भेज सकते हो, बट आई ऑल्सो नीड इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है ना। हाँ, Monica and Roshni, you can go through it once more, twice, thrice, how many times you want. ये ऑडियो सेशन और ये जो टेस्ट था ये प्रैक्टिस टेस्ट था, इसीलिए था सो दैट आप लोग इसे गो थ्रू करो, सुनो, समझो, बार बार इंस्ट्रक्शंस रीड करो, क्वेश्चंस रीड करो। देखो आंसर मैं इसीलिए नहीं बता रही, अगर मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस कर लूंगी देन यू विल बी अवेयर कि अच्छा ऐसे यहाँ पे ढूंढना था, ठीक है। बट आंसर मैंने इसीलिए यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। चलो एक बार ठीक है, एक बार वीडियो सुनो, एक बार ऑडियो मतलब वीडियो को दोबारा देखोगे, ऑडियो सुनोगे, दूसरी बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, है ना। समझ में आएगा कि ठीक है चीजें क्या बोली गई हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे आंसर कैसे करना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर पार्ट से पहले जब भी पार्ट स्टार्ट करोगे बेटा ये चीज जरूर रीड करनी है। हर पार्ट से पहले व्हेनेवर देयर इज रिटन, ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें गो थ्रू करना है इससे, और हर पार्ट से पहले क्या करना है, क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना। जो इंस्ट्रक्शन है उसे गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद में क्या, कोई बात नहीं गगन, दैट्स है ना। देखो यहाँ पे भी तो प्रैक्टिस ही हो रही है, डोंट स्ट्रेस इट आउट। ऐसा मत सोचो कि नहीं हम पहले कहीं और देख के आएंगे फिर करेंगे, नहीं, यही चीज है, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं तो पहले यहाँ पे गो थ्रू करो, उसके बाद इसी को दोबारा देख लो। हाँ ऑब्वियसली 2 3 4 बार यार जितनी बार करोगे ना उतनी बार तुम फेमिलियर हो जाओगे, सुनोगे, समझोगे। और मेरा मेन इंपॉर्टेंट मतलब मेन जो कंसर्न है वो किस चीज पे है बेटा, इंस्ट्रक्शन पे। देखो इंस्ट्रक्शन रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाई। चलो वापस से एक बार पार्ट 1 पे जाते हैं। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि नॉट मोर देन 2 वर्ड्स इसने बोला, ठीक है ना। पार्ट 3 में ये जो क्वेश्चंस थे लास्ट वाले तो एमसीक्यू थे, तो इसमें तो कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी नहीं, इसमें तो एक चूज करना था, आप लोग कर सकते थे। पर जहां पे ना हमें आंसर देने हैं, इनपुट देना, अब देखो इस वाले में देखो पार्ट 3 में इसमें राइट ओनली 1 वर्ड, तो नाउ यू नो कि ना इनमें सिर्फ 1 वर्ड ही आएगा, इसमें आप 2 वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या करोगे, आप लोगों को 1 वर्ड में आंसर देना, आइदर इट इज लेट्स से, अगर वो वाला याद है 1969 वाला कि अगर 1969 उसमें बोला गया है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है ना, रादर देन बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स और द वर्ड्स। तो हम इसे क्या करेंगे, न्यूमेरिकली लिख देंगे। तो ये सारी चीजें, तो देखो यहाँ पे भी 1 वर्ड बोला है इसने, अब यहाँ पे तो खैर हमें चूज ही करना था। सिमिलरली पार्ट 1 पे देख लेते हैं। अब देखो पार्ट 2 में यहाँ पे जो ये हमें आंसर्स लिखने हैं, इसने बोला है नो मोर देन 2 वर्ड्स। नो मोर देन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है, 2 ही वर्ड्स यूज करने हैं। आइदर लेट्स से कोई बोलेगा टू से, ठीक है ना, और वॉक अवे, तो ये 2 वर्ड्स है। अगर एक भी यूज करोगे तो भी सही है, लेकिन 2 करने हैं, 2 से ज्यादा नहीं करने, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं बेटा। 23 क्वेश्चन नंबर, चलो देखेंगे 23 पे क्या है भाई, मैं पहले बता दूं। और पार्ट 1 में नो मोर देन 1 वर्ड। अब देखो पार्ट 1 में क्या बोला, नो मोर देन 1 वर्ड। नो मोर देन 1 वर्ड का मतलब है अब इसमें 1 वर्ड ही यूज करना है, मतलब 1 वर्ड से ज्यादा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 1 वर्ड से ज्यादा नहीं कर सकते, उसका मतलब क्या है, द आंसर इज गोइंग टू बी इन 1 वर्ड ओनली। क्लियर।
तो चलो, आई होप इट इज़ क्लियर बेटा। ये चीज़ें क्लियर हैं कि हमें ऑडियो में बेसिकली जो हमारा लिसनिंग टेस्ट होगा उसमें हमें करना क्या है ना। व्हाट इज़ योर होमवर्क? देखो आप लोगों का होमवर्क क्या है। अब आप लोगों का होमवर्क है इस ऑडियो को, इस वीडियो को एक बार गो थ्रू दोबारा से करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक मुझे आंसर्स भेजने हैं पहले कमेंट सेक्शन में, एंड इफ़ यू आर विलिंग तो मुझे क्या करना, मुझे फॉर्म में भी, मतलब क्वेरी फॉर्म में भी आंसर सबमिट कर देना, ठीक है। सो मेरे लिए दोनों कन्वीनियंट है। मैं वहाँ पे भी देख के आप लोगों को एक फॉर्मेट, मतलब देखो यहाँ पे अब मैं आपको मेल बैक नहीं करूँगी आंसर, मेन चीज़ नो वन इज गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर। कार्तिक इज सेइंग कि वीडियो इज लैगिंग। कोई बात नहीं, अगर अभी लैग कर रही है बाद में देख लेना, ठीक है। इट्स ओके। देखो अभी डिस्क्लोज नहीं करोगे कोई बात नहीं, बाद में तो देखो मैं कल आंसर डिस्कस करने ही वाली हूँ। कल के 5 से लेके जो हमारा 550 तक का सेशन होगा, 540 तक का, उसमें हम लोग आंसर ही डिस्कस करेंगे। ऑडियो प्ले करूंगी, हर पार्ट को प्ले कर करके बताऊंगी कि यहाँ पे क्या बोला गया था, किस सेंटेंस को कैसे रीफ्रेज करके देखो यहाँ पे ऐसे लिखा भी है एंड हमें आंसर ऐसे देना है। तो कल हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि आंसर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अरे यार सब आंसर्स बताओ, एक दूसरे की हेल्प करो ना। कौन सा तुम अभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो रहे हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प करो एंड देन विल डिस्कस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं अगेन, कल 3 PM अगेन वी विल बी डूइंग दी vocab सेशन। मार्क्स इन द फॉर्म, चलो ठीक है, मार्क्स के लिए भी कर लेंगे, पहले मुझे आंसर्स दो, ठीक है ना। देखते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। फर्स्ट आई विल जस्ट लुक एट योर परफॉर्मेंस। अब बहुत ही बेकार होगा तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ताकि मुझे भी बुरा ना लगे, तुम्हें भी बुरा ना लगे। बट अगर अच्छा रहेगा तो आई विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स। एंड वन मोर थिंग, उसके बाद में हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो खुद ही तुम लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ तुम्हारे कितने आए हैं, ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रीफ्रेजिंग। मैंने कहा था देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलमोस्ट सिमिलर दिख गया था, 3 और 4 में बहुत सारा रीफ्रेज हो गया है ना, देखा होगा। हाँ ऑब्वियसली आप गगन शुरू से देखो एंड शुरू से आप आंसर करोगे 1 गो में, सो दैट यू डोंट हैव टू रिपीट इट और पॉज करके वेट मत करना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इसमें पॉजेज लिए हैं, सो आपके लिए बहुत अवेयरनेस होगी। 23 का आंसर में EXE आधा ही लिखा। अच्छा कोई बात नहीं। यस कार्तिक, 3 PM पे बेटा वो कैप की क्लास होती है, आप नहीं आते हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। AM नहीं होती, PM होती है बेटा। सुबह के 3 बजे थोड़ी क्लास लेने लग जाऊंगी मैं, PM पे क्लास होती है, 3 PM, ठीक है। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आप कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड डू आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एंड क्वेरी फॉर्म बोथ। एंगेजमेंट चाहिए मुझे, एंड अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करवाओ कि देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ओके। So do call everybody. That is a humble request to all of you. Okay. Chalo. Bye bye and have a great day. Okay. Sukhi is saying me part 1 के, अरे that's great. Sukhi आप ना बेटा यहाँ आंसर मत करो, ये लाइव चैट है, ठीक है ना। Once the video is ended, फिर कमेंट सेक्शन में आप आंसर करना, ठीक है। I'm just waiting. और ऐसे नहीं 1 से लेके 9 तक नहीं, प्रॉपर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ऐसी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20, पार्ट 3 एंड सो ऑन, ओके। भाई मैं ही नहीं आऊंगी क्लास लेने, तुम क्या नहीं आओगे, मैं खुद नहीं आऊंगी। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।